हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल की आंसर कीज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास केमिस्ट्री में से, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलॉइड। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। Question number 33 is AS2S3 is the example of negative colloid. Option B is correct. Question number 34, which does not belong to second transition series. So gold is an element of third transition series. तो option D is correct. Question number 35 है आपके पास, the pH of 0.01 molar NaOH solution is. Option D is correct. Basically इसमें पहले POH निकलेगा, then 14 माइनस POH करके आपके पास जो है pH की वैल्यू इसमें निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 इज इक्वेनल इज ट्रैंक्विलाइजर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनिलीन इज प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, गैमेक्सेन इज द नेम गिवन टू। ऑप्शन नंबर सी, C6H6Cl6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कैलोमल इज Hg2Cl2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 40, purple of Cassius is colloidal sol of gold. Option C is correct. Question number 41, nylon 6,6 is not a homopolymer. Option number D is correct. It is condensation polymer, polyamide, copolymer also, but it is not homopolymer. Question number 42 is the rate of chemical reaction double for every 10-degree rise in temperature. If the temperature is raised by 50 degree, the rate of reaction increases about, it is 2 raised to the power 50 by 10, that is 2 raised to the power 5. So option C is correct, 32 times. Question number 43, which is the anhydride of nitrous acid. So option C is correct, N2O3. Question number 44, how many crystal systems are there? So there are 7 crystal systems. Option A is correct. Bravais crystal system या crystal lattices इनको बोला जाता है, उसमें टोटल फिर डिवीजन करके 14 आते हैं, वैसे इन जनरल क्लासिफिकेशन 7 की है। क्वेश्चन नंबर 45, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम इज कंसिडर्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 46, अ गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज फॉस्फीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ ओजोन विल इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 48, the material used in solar cells contain silicon. Answer may be cesium also as well as silicon also, but silicon is mostly the correct. Question number 49, which of the following is not expected to have zero entropy at 0 degree Celsius? Question number 49 का answer must be bromine. Question number 50 is the white phosphorus is stored in. As we know, white phosphorus is the most reactive form of phosphoruses among all the three. So it is stored under water. Option B is correct. Lead pencil contain graphite. Question number 52, Hindenburg reagent is. Option number A is correct, C6H5SO2Cl. Question number 53, the chemical name of B1, vitamin B1 is thiamine. Option B is correct. The formula, question number 54, the formula of Marshall's acid is. Option C is correct, H2S2O8. Question number 55, the phenomena of radioactivity was discovered by Henry Becquerel is the most correct, because यहाँ पे डिस्कवरी पूछ रखी है आपसे, बाकी काम तो रेडियो पे रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी ने भी किया था, ठीक है, बट डिस्कवरी पूछी है, आंसर में ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। तो हेनरी बैकरल ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी जो थी वो डिस्कवर करी थी, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 इज चिली सॉल्ट पिटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज NaNO3, इट इज नोन एज चिली सॉल्ट पिटर। क्वेश्चन नंबर 57, डेटिव बॉन्ड is present in which of the following molecules? तो according to octet rule आप स्ट्रक्चर इसकी बना के चेक करिएगा। ऑप्शन ए इज मोस्ट करेक्ट, SO3 में 2 डेटिव बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं जो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। इट वाज एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20th, दैट इज कैल्शियम, दैट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम।
Question number 59 is Nelson's cell is used for the manufacturing of which of the following? The answer is NaOH. The last question of chemistry section is what is the boiling point of methane? The boiling point of methane is 111 Kelvin. Option number D is most correct. तो ये था आपके पास केमिस्ट्री का सेक्शन. अभी इसी में हम फिजिक्स वाला सेक्शन भी डिस्कस करेंगे. तो फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रखा है. इन रेफरेंस टू अर्थ इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 एंड देन फ्रॉम पोजीशन 2 to 3 देन द करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी. देखो 1 पोजीशन तो सेंटर पे है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0 और इसका फॉर्मूला इज g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर. द आर जहां पे आर की वैल्यू कम, रेडियस जहां पे कम होगा अर्थ का वहां पे g की वैल्यू इज ग्रेटर. तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जा रहे हैं g की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास यहाँ पे इंक्रीज करी क्योंकि आर की वैल्यू कम हो रही है. तो सबसे कम ग्रेविटी आपके पास फर्स्ट पोजिशन पे होगी, फिर उसके बाद G3 पे होगी और फिर G2 पे होगी. तो ऑप्शन नंबर आई थिंक डी इज मोस्ट करेक्ट. सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एट G2, फिर G3 और G1 पे तो आपके पास खैर 0 होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट P अबाउट द सन S. द शेडेड एरिया that is this one SEA is twice the shaded area of SUN. If T1 is the time for planet to move from E to A, T1 time is taken by the planet to move from E to A and T2 is the time to move from N to U. इधर से T2 है आपके पास. Then इनमें से which one is correct? When you solve this, you will get option number C is correct. Question number 63. For a satellite of Earth moving around it, the ratio of kinetic energy to potential energy is option number B is correct. 1:2 is correct answer. Question number 64. Spherical shape of small molecules of water is due to the phenomena of surface tension. Option A is correct. Question number 65. The temperature on Fahrenheit scale is 77 degrees Celsius. Then the corresponding temperature in Celsius scale is 25 degree Celsius. You can convert it by using the formula of conversion of Fahrenheit to degree Celsius. Question number 66. The total energy of a particle executing simple harmonic motion is E. When displacement of particle is half of the amplitude, the kinetic energy of the particle is 3/4 times the energy of particle which is executing simple harmonic motion. So option C is most correct here. Question number 67. If the frequency of human heart is 1.25 hertz, the number of heartbeats in 1 minute are equals to 75. Option B is most correct. The speed of sound in vacuum is, as we know that sound needs material medium to propagate. So option A is most correct. It is 0 meter per second. It is the repeated question. Question number 69. Electrostatic force between a proton and neutron will be 0. As we know, electrostatic force may be attractive, may be repulsive. If it is in between same kind of charges, then it is repulsive, and if it is in opposite charges like positive and negative charge, then it is attractive. But here we have positive charge on proton and on neutron there is 0 charge, hence the force or the nature of this electrostatic force must be 0. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70. तो क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करके इनमें से कोई आंसर बन नहीं रहा है, इसके बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 71. 7 capacitors each of capacitance 2 nanofarad are to be connected in a configuration to obtain effective capacitance of 10/11 nanofarad. Which of the combination will achieve the desired result? So here when you substitute all these values in all the values of this 2NF in type B of the circuit, then you will get 10/11 nanofarad of equivalent capacitance. Next is question number 72. If electric dipole is closed in a Gaussian surface, then electric flux will be 0, because in electric dipole we have pair of two equal and opposite charges, so net charge on the surface is 0. Hence, according to Gauss law, we have phi is equal to
1 by epsilon naught times the charge enclosed, because charge is 0, so flux will be 0. Question number 73. If area of resistor is double the original and length is half, then new resistance will becomes 1 by 4 times. When you solve it, the hint will be that R is equal to rho into L over A. The new resistance will be rho L by 2, as we know that length is halved and area is doubled. So here we have 1 by 4 rho L over A. तो ये 1 by 4 होगी आपके पास, ये तो पुरानी आ गई R, ये 1 by 4 times of R होगी. So option D is most correct. Next is carbon, question is about carbon resistor. Question number 74. If resistance is this and it is to be represented, then sequence of colors in carbon resistor would be red, as we know 2 digit. First digit is 2 and it is used for red. Next is 5, it is used for green. Then for black there is no multiplier is given, so we can take it 10 raised to the power 0, which is also equal to 1. So multiplier here is 1 and the tolerance power is plus minus 5 for gold. So option number C is most correct. Question number 75. Kirchhoff's first law of electricity, which is called as junction law, it is based upon law of conservation of charges. Question number 76. Sound travels fastest in solids. Option C is most correct. What is 1 kilo? In this question we have given option C as the correct answer. It is prefix of a number. Any kilo means 1000. Okay? It may be grams, liters, anything else. Kilo means 1000, so it is prefix of a number. Question number 78. 1 light year is, option B is most correct, 9.46 into 10 to the power 15 meter. Question number 79. An animal is tied with 77 meter long rope and it completes a semicircle. The maximum distance, this one, that is 2 pi r ka half, that is pi r, that is by 22 by 7 into r is 7, so 7 se 7 cancelled, 22, and the displacement is 7 plus 7 14. Option D is most correct. क्वेश्चन नंबर 80 में फिलहाल हमने इसका भी आंसर जो है वो नहीं दिया है, इसके बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते. मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड आपसे पूछ रखी है. Question number 81. A body is dropped from a height. What is the ratio of distance traveled by the body during 4th and 3rd second? If you find it out, it would be 7:5. Question number 82. Which law of conservation is followed by Newton's third law of motion? So here it is, conservation of linear momentum. Question number 83. If x is equal to velocity into mass upon time, then what is x? This velocity upon time denotes acceleration. This is mass. So x will denote f. F is equal to ma is the formula. So option A is most correct. Question number 84. When you solve this question, इस question में आपको equation of motion भी लगेंगी, इसमें equation of motion लगेंगी और जो आपके पास coefficient of friction है एक उसका concept लगेगा, that F is equal to mu times नॉर्मल रिएक्शन. ओके, उसके बाद सेकेंड लॉ लगा के आप एक्सेलरेशन निकालो, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जब हम. द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 85. एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोज वर्क. ऑप्शन नंबर बी इज मोस्ट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 86. अ चाइल्ड पुशेस अ टॉय कार विद फोर्स 50 न्यूटन. पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. The power exerted by a child in displacing the car by 2 meter in 50 seconds is, so work done is force into displacement. When you solve it, you will get 2 as the answer. So option A is most correct. Question number 87. If the momentum of a body is increased by 50%, then what percentage increase in kinetic energy of the body would be? It would be 125%. Which one of the following has largest angular velocity? So here the answer is option B, hour hand of the clock. Question number 89. A ring and a disc of same material having same mass capital M and radius capital R are rotating about an axis perpendicular to its plane. Then moment of inertia will be more in case of ring. Option number C is correct.
Last question is question number 90. A diver jumping from springboard exhibit somersault in air. When he curls his body, which of the following options are correct? Option number B in this case is correct. Angular velocity increases and moment of inertia decreases. So option number B is correct. तो ये था आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन. आई जस्ट होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.